Om Sri Chinmaya Sadgurave. So, (342) yesterday we understood. It was from Brihadaranya Upanishad 4.4.23. So the two supplementary qualities necessary in an individual who wants to experience the one self present everywhere are that he must be a renouncer and has listened to the discourses upon the scriptures. So the parameter Bhagavan kept Srotriya and Sarvatyagi Bhikshu, who will be liberated. मुक्त कौन होगा कौन मुक्ति की अधिकारी हो सकता है न जो श्रोत्रिय है and renouncer bhikshu. What will be the effect? If he lives his life according to Sravanam, he will experience oneself, not his self, oneself everywhere. Clear? It's not that मेरा आत्मा सब में देखूंगा. He will realize one Atma. Clear? A sannyasi is one who has renounced everything and lives on the bare minimum of objects that he may accidentally come across by sheer chance and is not running. Ghosh Babu, phonটাকে mute করেন. On the bare minimum of objects that he may accidentally come across by sheer chance and is not running hungrily after them. That's the thing. See, renouncing should be in mind. If the sannyasi lives in a society, in an organization, then organization has some parameter that you have to. तो एक दिन एक सभा में गया तो शर्ट में रिंकल था. आपका परिचित अम्मा बोला हमारे चिन्मय मिशन के स्वामी का ये रिंकल नहीं होता स्वामी जी. अच्छा, तो I'm not criticizing. Means they have their mental parameter that our swamis wear these things. Whether the swami is attached with that iron clothes or not, it doesn't matter. When he caters society and lives for the society, by the society, then he has to take care of the emotions of the society.
पहले पहले जब आया तब ऋषिकेश से सांदीपनी, सांदीपनी में तो कोई बोलते नहीं थे, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट प्लेस, बट सेंटर इज डिफरेंट। तो बोलने लगा हमारे साधु तो, हमारे स्वामी लोग टारबान नहीं बांधते। अरे बांधते नहीं, कोई ना कोई तो शुरू किया। इफ यू सी मित्रानंद जी वेयर सम peculiar cap, so he starts, someone will do something else. Tradition starts from something else na? Where you will see that the swamis are doing that mustache and beer in like, you will find in Chinmay mission like organization. So organization is something different. A swami's life is absolutely individual life. He may stay in different organizations. If it is not, he is not at all a swami. There will be no hankering for the object. I need that, I want no wanting. Basic requirements. And whatever the thing comes, he may accept, he may not accept, but no attachment with the things. That is the sannyasa lakshana. Wherever he is in Himalayas, he will live on grass. He is in society, some sabha is there. In the hotel, there he will, there no fanaticism. Sannyasi will not be fanatic. I told you I have seen some swamis जो टायर काटा हुआ चप्पल ही पहनेंगे। अब सोचिए कलकत्ता शहर में कहाँ मिलेगा? 15 रुपया वाला टायर की, 30 रुपया वाला टायर की चप्पल ढूंढने में 200 रुपया किराया लग जाता है। 2 आदमी लगेगा, इधर उधर पूरा दिन लग जाएगा। Because he will not wear except that tired soul. It should not be. A sannyasi will not be fanatic with his renouncement also. No attachment with anything else. Whatever comes. Palace is coming, he will sleep. No bed at all in a thatched hut, he will sleep. Rajbhog is coming, he will eat. Grass is coming, he will eat with the same happiness. Sannyasi Lakshana. That is renouncement. Renouncement for the attachment of any particular thing. Clear? Such an individual must practice samadhi. It is thus prescribed by the Brihadaranyaka Upanishad. Arudha Shakte Rahamo Vinashaha Kartum na Shakya Sahasapi Panditai Ye Nirvikalpakhya Samadhi Nishchalaha Tanantarananta Bhavahi Vasana Arudha Shakte Rahamo Vinashaha Kartum na Shakya Sahasapi Panditaihi
ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चलाः तानन्तरानन्त भवा हि वासनाः. Even wise men find it impossible to suddenly destroy the ego. Once it has become strong, except for those who have become perfectly calm through Nirvikalpa Samadhi. Indeed, desires are the effects of innumerable births. What I every day try to tell you, please, if you want to do anything else, work on your ahankar. Try to find out. Without nirvikalpa samadhi, ahankar doesn't go. You even don't strive for savikalpa samadhi also. अहंकार जाना इतना सीधा बात नहीं. कहां कहां सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ है. You have no idea. Suppose I always, in last 30, 40 years, I am accustomed with either our own car or taxi. I can't travel by bus. बस में कौन चढ़ता है? We have no idea about how. We have many excuses for that. हम लोगों के पास अहंकार का मतलब सिर्फ ईगो है. उसमें ही तो गलती हो रहा है. अहंकार कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. It is so hard for गुरु कृपा और दैव कृपा के बिना अहंकार जाते नहीं. लेकिन और एक बात है, अगर कृपा तो हो गया, am I ready to accept it? आत्म कृपा की भी जरूरत है. So like Durga Puja. In Durga Puja, Sankalpa Bodhan is very important. Why? 5 days without any hassle. हर दुर्गा पुजारी का और तंत्रधारक को दुर्गा पूजा के बाद ही तबीयत खराब हो जाता है. If they do perfect puja, because of the puja schedule. लेकिन ये पूजा के 5 दिन I will be fit enough. For that, Daiva Kripa is required. You must know, for everything else, Daiva Kripa, 'Daiva-kripa' and 'Atma-kripa' both are. 'Atma-kripa' 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 and
सिमिलरली इक्वल। ये साधन जीवन में अहंकार के ऊपर हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक चीज को संभालिए, बाकी सारे भगवान और गुरु संभाले। उस एक जगह पर हम लोग अटके हुए हैं। Whenever you are having any sorts of reservation in life, should know ahankar. See Bhagwan Buddha. Bhagwan Buddha was such a non-violent person. ये एक बकरी के लिए उन्होंने अपने सिर को चढ़ाया। If you want to sacrifice this goat, first I am ready to sacrifice myself. And suddenly some divine thing happened. उस व्यक्ति का मृत्यु कैसे हुआ? सूकर की मांस खाने के बाद। Means in Bhiksha, there is no reservation. If they told, अरे जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, हरिओम तत्सत। पता नहीं मैं कौन हूं, मुझे भगा रहे हो। नो, नो रिजर्वेशन। No reservation for Bhatsana also. If they do, yes. Aldous Huxley. You have heard the name of the writer. He has made a very nice comment, you know. साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने प्रमाण किया कि पेड़ की लाइफ है। एक्चुअली इट इज नॉट। पेड़ की लाइफ है ये तो वेद में स्वीकार किया। अब दुर्गा पूजा में जो अंतरंग मूर्ति है नवपत्रिका, वो प्राण की प्रतीक है। लिविंग ट्री यूनिट, लिविंग प्लांट। तो व्हाट न्यू जगदीश चंद्र बोस इन्वेंटेड, जो अनुभव होता है पेड़ का भी। एंड ऑल्डस हक्सले ऑल्सो वर्कड विद इट simultaneously and put that when he put some intoxicants for the tree, with the wavelength he has shown that the tree is also intoxicated. And once one scientist, biologist told, who are vegetarian because they don't want to see the pain of the animals slaughtering, they don't please come to Bose's Institute. There so modern equipments are there. The same pain and agony happens for the tree and plantains. If you pluck one leaf, if you pluck one flower, if you pluck one fruit, it's the same pain happens for the trees and the plantains. Anubhav. So the thing is, Panditaihi api arudha saktehe ahamaha सहसा विनाशः कर्तुम न शक्यः। ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चलाः तान अंतरा हि वासनाः अनंत भवाः। What does it mean? Panditaihi api, not only for the
common man who is having panda, the great knowledge who have studied a lot of books many a times, who have memorized shloka after shloka, understood, written, taken classes, given lectures in many conventions, refuted so many scholars, even for them also. Arudha saktehe ahamaha saha. Arudha sakti, which is very densely imbibed. Arudha, जिनका मूल इतना कठिन है, हम लोग प्रकाश देख के सोचते हैं कि ये अहंकार नहीं है। We should know, पेड़ की मूल एक जगह पर होता है, फल और एक जगह होता है। So since last 6 months or more than that, I am having a pain over here, constant pain. I have consulted doctors, allopathy and other things. I did not get relief. Last night, one person I met, just last night, he was having some water. He told Swamiji, this is charged water. What does it mean? Now that I will teach you afterwards what is charged water. And he startedly pressing my ear. And just he took 45 seconds and give that water. It's not like Vicks, just plain water. He brought it in the glass. Believe me, there is no pain. 12 hours over, there is no pain. So I asked that, मैं कितना ट्रीटमेंट करा है? बोला आप तो, आपका प्रॉब्लम मूल में है, वो कहीं छुपा हुआ है. And you are doing treatment to the fruit. So how it will happen? अहंकार ऐसा है. हम लोग प्रकाश के ऊपर काम करता है, मूल कोई दूसरा जगह पर छुपा हुआ है. आरूढ़ सकते है अहमः सहसा विनाशः कर्तुम न शक्य. Suddenly it doesn't happen. You have to practice it day after day after day after day. अगर आपको बहुत जन्म की पुण्य कर्म में कोई गुरु मिल जाए ना, जो आपको हर वक्त हैमरिंग करेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ योर अहंकार. अहंकार, हमारे अहंकार के वजह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो दूसरी बात है. एंड आई कांट एक्सेप्ट इट. अरे क्या बोल रहा है अहंकार? दुनिया में एक भी व्यक्ति मुझे अहंकारी नहीं बताया, बच्चा छोटा से लेकर बड़ा तक सबने बताया हाँ हाँ तू कितना सरल है, कितना सीधी है, कितना. और आप कौन है बोलने वाला? Our ahankara can't accept it also. I can't accept that someone is telling me that your problem is in ahankara. That non-acceptance is the sign of ahankara. Clear? ये निर्विकल्पक्य समाधि निश्चलाः तान अंतरा.
तान अंतरा मतलब उन लोगों को छोड़कर। किन लोगों को छोड़कर? ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला, इज ऑलवेज इन निर्विकल्प समाधि, उन व्यक्तियों को छोड़कर ये संभव नहीं। क्यों? अहंकार कहाँ से आते हैं? अहंकार वासना, वासना अहंकार, ये बहुत जन्म अनंत भवा, अनंत जन्म से हम लोग लेके आ रहा है। लेकिन एक ही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, दग्ध अहंकारानि, दग्ध वासना, एक ही ज्ञानाग्नि सबको भस्म कर सकते हैं। क्लियर? और एक श्लोक लूंगा। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेप शक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः। द प्रोजेक्टिंग पावर, विक्षेप शक्ति। सुनिए क्या करें? द प्रोजेक्टिंग पावर थ्रू द एड ऑफ द वेलिंग पावर, एक है आवरण शक्ति, एक है विक्षेप शक्ति। फर्स्ट आवरण, उसके बाद विक्षेप होता है। जो मैजिक होता है, पहले तो हमारा ज्ञान को आवृत कर देता है किसी से भी, एक बहुत सारे लाइट या ऐसे वेशभूषा रहेगा, कुछ भी हरकत में, उसके बाद विक्षेप कर देता है। ये अंडा था, कबूतर बन गया, कबूतर फूल बन गया। सो पहले आवृत कर दिया, उसके बाद विक्षेप चल रहा है। The projecting power through the aid of the veiling power confuses the man with storm of egoistic ideas and distracts him through the attributes of the agitation. So what happened actually? The attitude of the individuality, what is that? I am a perceiver. मैं दृष्टा हूं। अरे मैं अपने आंखों से देखा, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आई एम ए फीलर, ये मेरा मन की अनुभव है। किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया, ये मैंने सोचा, मेरा विचार से ऐसे ही है। अब देखिए ना, ये जो व्यक्ति, अब क्यों करने नहीं करने दूंगा, मेरा विचार में ये ठीक नहीं। परसीवर, फीलर, थिंकर, that is the identity of an individuality. So it arises as a result of one's ignorance of the self. It's clear. It has been maintained by each one of us over a long period of time. During our slow scrambling up the ladder of
evolution from the beginning of time. Hence, this ego cannot be annihilated immediately. It's not easy. Except those who have become steadfast in the experience of nirvikalpa samadhi. When the ego goes deeper and deeper into the contemplation, when the ego gets dissolved, then it totally disappears. So the power of willing renders the intellect incapable of the apprehending reality. What I told that before magic, that willing power, apprehension power को ही खत्म कर देता है. It's a science. Therefore, the mind gets agitated. Whenever the intellect gets clouded, the mind projects and imagines. This is the natural trick of the mind and intellect at all times. The individual comes to suffer the endless sorrows because of the agitation created in the mind. The next line is eternal line. Each and every being in this universe are unhappy in their own way. Don't say because of the Jagat you are unhappy. You are not getting something else, that is why you are unhappy. Not at all. जीवन में ऐसे बहुत सारे हैप्पी व्यक्ति है जो उनका एक छोटा सा परमाणु भी जिनको उनको नहीं मिला, but he or she is happy. After getting a lot of things, I am unhappy. It's an individual journey. So each and everyone is unhappy in their own way. What shloka says? Vikshepa shakti abritehe balat purusham mohinya aham buddhya eva yojayitva yes tat gunaihi vikshepayat. How? Now vikshepa shakti, the projecting power of maya, abritehe balat. अपृत जो होता है कैसे, with a heavy enormous force, enormous horsepower. और होकर क्या होता है? पुरुषम मोहिन्या, पुरुष को मोहिन्या अहम बुद्धिया एवं योजयित्वा. योजयित मतलब युक्त करते हैं. कैसे? किसके साथ? ना अहम बुद्धिया एव, अहम बुद्धि के साथ हमारा विक्षेप शक्ति. पहले तो आवरण हो गया, आवृत हो गया मेरा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मैं शुद्ध आत्मा हूं. आई एम नॉट दिवाकर चैतन्य, आई एम आत्मा. ना तो मैं सन्यासी, ना तो मैं ब्रह्मचारी, ना तो मैं गृहस्थी, ना तो मैं दिवाकर चैतन्य, ना तो मैं इंचार्ज ऑफ चिन्मय मिशन. आई एम आत्मा. ये बोध जब थोड़ा सा भी आवरण लगेगा, पहले अफेक्टेड होता है अहम बुद्धि, वो मोहित हो जाता है. मुझे ऐसे बात बोल दो.
और योजित्वा तत् गुणैः भिक्षुपयति. Whenever I will consider myself as the head of this Kolkata Chinmay mission, all other fakra will come. Realistic. Chinmay mission is an international organization. How can I travel by public bus? How can I do like this, like this, like this, like this? ये एक अहंकार है. पहले मैंने सुना इसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेक्रेटरी थे. He was famous for scolding the swamis and brahmacharis, mainly brahmacharis. And he was happy with that ego. And other people used to support him. How nice he was. कितना कठिन तरीका से ब्रह्मचारी को रखते थे. And it was the proud of him. और then ब्रह्मचारी बास में नहीं, उन्होंने सब भूल गया कि he was expressing his ego that I am the secretary. He is maybe the secretary of the organization, not the swamis or brahmacharis. They are absolutely individual soul, free soul. ये गलती हो गया ना तो दिक्कत हो गया. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होता है इसीलिए, चाहे वो गृहस्थ सेक्रेटरी हो, चाहे वो सन्यासी सेक्रेटरी. Nobody is the ruler of sannyasi and brahmachari. They are absolutely free soul. That's why अपने घर द्वार सब ऐसे थूक कर आया है वो लोग, ऑर्गेनाइजेशन में फंसने के लिए नहीं. So everyone should be aware of that, aware of our own ego. Harihi Om Tat Sat. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi